Hey Sam fam, welcome back to another DIY Tuesday. If you're new here, this is Sam and I create videos on almost everything. I posted a poll on my Instagram profile where I asked you guys to vote between transforming old shoes and transforming old clothes. So most of the guys, I think 69% of them voted for transforming old shoes. So today I will be DIYing my old sneakers into something trendier or wearable. So yeah, let's begin, shall we? So what you're gonna need is old sneaker or canvas shoes, scissors, needles and a lot of embroidery threads. I got these navy blue sneakers from Big Bazaar for rupees 399. The only disappointing thing was that toe के पास से इसका fabric उखड़ रहा था. I decided to make cute little sunflowers, so I chose yellow and brown color at some distances, and I think this will look more summerish. सबसे पहले मैंने येलो धागे को नीडल में डालकर रेडी कर लिया. जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा शैबी लग रहा है, तो मेरा मेन एम था कि फ्लावर्स ऐसी जगह पर बनाऊं कि ये फटा हुआ पार्ट थोड़ा छुप जाए. इसके पहले I decided to mark some random points where I want my flowers to be. I don't know how I'm gonna reach that point, but yeah, let's see. So मैंने randomly कुछ points बना लिए जहाँ पर मैं ये छोटे बड़े flowers बनाने वाली हूँ. आप चाहें तो आप कोई pattern भी बना सकते हैं. Basically, I am using a chain stitch जहाँ से आप एक point से start होकर अलग अलग directions में petals बनाएंगे. This is how I completed my 5 petals और सेम तरीके से मैं और भी 5 petals बनाकर ये 10 petal का एक sunflower complete कर रही हूँ. ये बन गया मेरा पहला sunflower. 10 petals का ये सनफ्लावर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड है. सो बाकी के फ्लावर्स मैंने 8 petals के बनाए और पूरे शूज़ पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. शूज़ का मटेरियल थोड़ा थिक भी है, तो बनाते बनाते उप्स दिस हैपेंड. नो प्रॉब्लम, दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट शू एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. For the next step, I have to make the middle part of the flower. So I am taking this brown thread and I am going to use some kind of rose stitch जहाँ पर आप सुई के चारों ओर इस धागे को ऐसे लपेट देते हैं. तो यहाँ मैंने 3 से 4 राउंड्स लिए हैं और उसी में ऐसे डालकर जब आप खींचेंगे तो ये एक बॉल की तरीके से गोल गोल सा pollen green बन जाएगा. And I just love how it came out. I am attempting this stitch for the first time and I really like it. So I repeat the same process for other flowers of the shoe, and yeah, I just completed it within I guess 10 minutes. Voila! I'm done with the first shoe and this is how it looks like. I did the same thing and I made the another one too. Now finally they look like this, and get ready for the final transformation. Hey guys, that's it for today's video. I hope you guys like these cute sunflower sneakers, and if you want you can follow me on Instagram and Facebook, because for my DIY video I post a lot of polls over there. Sorry, I think I should take a leave now until we meet on another Friday. AllahHafiz.